Hello everyone, welcome back to the Margdarshak platform. So first of all, thank you people for showing your love and support towards our previous year paper series. So today, on your higher request, we are resuming our previous year paper series. In this series, let me tell you that we are already done with the two paper of CDS, that is CDS 1 2025 and CDS 2 2024. And next we are doing the CDS 1 2024 paper. In that we are already done with the episode 1 that contains 30 questions. Today we are moving toward the next set of questions. So today we are moving toward the 31st question. So before starting the class, let me tell you about the Margdarshak mentorship program. So people, this is the program where you get one-to-one call support from your from mentors who have already cleared these examination multiple times, है ना? So this will help you in streamlining your preparation according to the need of examination. So without wasting your resources and your time at preparing for everything, I suggest you that you should once register yourself in the Margdarshak Google form, where you will get mentorship support, and we will provide you a basic and the practical plan for your examination, what you have to study, how you have to study, and when you can like practice the previous years, when should you start using the test series. So these things we will tell you when you are enroll in the mentorship program. This is free. This is for free for now, so you can register it without paying anything. Okay, so now let's move toward the question. That is the 31st question that says about consider the following statement regarding weightage of different articles in the wholesale price index, that is WPI. WPI से related है. That is first statement says the fuel and power have higher weightage in the WPI than that of primary articles. Okay, so basically WPI इज होलसेल प्राइस इंडेक्सेस. यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली फ्यूल और इनका है ना प्राइजेज है ना हैव हाइयर वेटेज इन द WPI देन द प्राइमरी आर्टिकल्स. ये वाला गलत है. फ्यूल और है ना पावर का वेटेज कम है इसमें, है ना. सेकंड वाला बोल रहा है वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन WPI इज हाइयर देन दैट ऑफ द फ्यूल एंड पावर. सो बेसिकली यहाँ पे देखोगे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का बेसिकली इसमें WPI है, यानी कि वेटेज देखोगे इसमें WPI में होलसेल मार्केट में, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का हाइयर वेटेज है. सो यहाँ पे आप देखोगे, सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट. यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, सो यू विल फाइंड दैट ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 32 says if India enters into free trade agreement with other nations, then the growth of exports of India would depend upon which of the following. So basically FATA that is a free trade agreement. So यहाँ पे आप देखोगे अभी भी इंडिया बात कर रहा है. इंडिया इज टॉकिंग अबाउट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन, UK. So you can refer to this can be asked in your examination because it is in news. So please remember it, है ना, and study it. Okay, so first statement says the extent of tariff reduction vis-a-vis most favored nation tariff. MFN is most favored nation. Okay, most favored नेशन. सो ये बेसिकली WTO में एक टर्म होती है मोस्ट फेवर्ड नेशन. सो दिस उससे रिलेटेड है. ओके, सो बेसिकली एक्सटेंट ऑफ टैरिफ रिडक्शन विज मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ. ओके, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे आप सेकंड देखोगे एक्सटेंट ऑफ रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड ऑफ रीजन. सो बेसिकली ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा. फर्स्ट यू हैव टू रीड द यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है ना, FATF विथ अदर नेशंस देन others nation, then the growth of export in India would depend upon which of the following. बेसिकली इंडिया की ग्रोथ के बारे में पूछा है. इंडिया की ग्रोथ कब होगी? जब इंडिया में एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स कम होंगे, है ना. सो यहाँ पे आप देखोगे सेकेंड इज बोल रहा है एक्सटेंट ऑफ रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ रूल ऑफ ओरिजिन. सो बेसिकली ये वाला ओरिजिन के रूल में अगर रिलैक्सेशन होगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा अल्टीमेटली इंडिया को. ओके, सो थर्ड इज द एक्सटेंट ऑफ रिलैक्सेशन इन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स. सो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ इज लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. डेफिनेटली ये वाला भी करेक्ट है. फिफ्थ सेज अबाउट द इनकम इन द नेशंस विद विच इंडिया एंटर्स इनटू
FTA, दैट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो बेसिकली अगर इनकम पे भी डिपेंड करता है, अगर बढ़िया इनकम होगी तो देन इट विल बी लाइक है ना गुड फॉर इंडिया, है ना। अगर कम भी इनकम होगी तो मतलब बढ़िया इनकम होगी देन इंडिया कैन एक्सपोर्ट मोर। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, है ना। एक्सटेंट ऑफ रिलैक्सेशन फाइटो सैनिटरी और सैनिटरी मेजर्स में अगर रिलैक्सेशन मिलेगा तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आप देखोगे तो डी, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल फाइव आर करेक्ट, है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन टेक दिस पेपर. Next is question number 33, that is which one of the following is an amphoteric oxide. So basically amphoteric oxide कौन से होते हैं जो कि मतलब कि बेसिकली मतलब कि एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस टू मेक सोल्ट और वाटर. सो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो डी हो जाएगा. यहाँ पे आप इसको देखोगे Al2O3, है ना. ये एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है और फिर सोल्ट और वाटर बनाता है. ये इसको आप 6HCl से रिएक्ट करवाओगे, HCl से रिएक्ट करवाओगे तो यू विल फाइंड दैट 2AlCl3, है ना, Cl3 प्लस H2 आ जाएगा. इसको अगर आप बेस से रिएक्ट करवाओगे Al2O3 प्लस यहाँ पे ना NaOH को बेस लिया है हमने, देन यू विल फाइंड दैट 2Na NaAl2Al O2 प्लस H2. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सोल्ट, दोनों में सोल्ट प्लस वाटर बन रहा है, सोल्ट प्लस वाटर. सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन. ओके, so this is how you can find this question. Okay, next is question number 34, that says about the correct order of the octane number of butane, pentane, hexane and cyclohexane. So basically इसमें octane क्या होता है, octane क्या करता है, quality of fuel अगर बड़ी है ना, मतलब कि octane बेसिकली होता है कि quality of fuel अगर मतलब हाई क्वालिटी, मतलब अगर octane नंबर हाई होगा, octane नंबर हाई है तो उसकी क्वालिटी भी हाई होगी, क्वालिटी ऑफ फ्यूल हाई होगा, है ना. तो यहाँ पे आप देखोगे अगर इसमें ऑप्शन देखोगे तो ना सबसे पहले यू विल फाइंड दैट ब्यूटेन की सबसे ज़्यादा होगी, ऑक्टेन नंबर सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है. फिर साइक्लोहेक्सेन होगा, फिर पेंटेन होगा, फिर हेक्सेन होगा. तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 35 सेज which of the following is correct order of reactivity of MgAl Zn Fe with HCl. सो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यू विल फाइंड दैट, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा रिएक्ट यहाँ पे है ना HCl से देखोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से भी आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा, फिर जेडन हो, जिंक होगा, फिर हो गया आयरन होगा, दैट इज Fe फेरस होगा. तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन ए दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट. यहाँ पे 36 क्वेश्चन सेज दैट मेथनॉल इज ए टॉक्सिक बिकॉज. मेथनॉल टॉक्सिक क्यों होता है ना. मेथनॉल इज बेसिकली CH3OH, है ना, एंड एथेनॉल दैट C2H5OH, है ना. सो यहाँ पे आप देखोगे एल्कोहल दैट इज वी यूज, है ना, एथेनॉल इज बेसिकली वी यूज इन कंजप्शन, ह्यूमन कंजप्शन एज वेल एज फॉर केमिकल यूज इन द इंडस्ट्रीज and in kind of factories. And CH3OH is basically a type of alcohol that is methanol. It is also used in chemical factories, but it is not for the consumption of humans because it is harmful. It can cause death, है ना. So let's discuss with the options that how it going to be act as in मतलब कि hazardous or fatal organ for other humans, है ना. So next first methanol conglutes the protoplasm. Second B option B says the methanol gets oxidized to methanol in the liver, which coagulates the protoplasm. Third is the methanol get oxidized to acidic acid in liver, which coagulates the protoplasm, है ना. So basically fourth is the methanol get oxidized to CO in liver, which coagulates द प्रोटोप्लाज्म. सो यहाँ पे आप देखोगे सो फर्स्ट ना सबसे जो अप्रोप्रिएट लग रहा है बेसिकली ये फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट इट विल अफेक्ट द लीवर बिकॉज यू मे हर्ट अबाउट कि ज़्यादा ना एल्कोहल का कंजप्शन करोगे योर लीवर पे लीवर
लीवर विल गोइंग टू बी डैमेज, है ना. सो यहाँ पे आप देखोगे लीवर से रिलेटेड है. सो फर्स्टली यू विल फाइंड दैट इन थ्री ऑप्शंस यू विल फाइंड देयर इज एन mention about the river liver. So basically you have to find this. So option B, if you read it clearly or effectively, then you will find that methanol get oxidized to methanol, है ना, methanol in liver which coagulates in the protoplasm. So basically ये वाला करेक्ट हो जाएगा कि methanol get है ना oxidized to methanol in the river which coagulates the protoplasm. So ये वाला करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे 36th क्वेश्चन is going to be option B. Okay. Question number 37 says vinegar क्या है basically एसिटिक एसिड से रिलेटेड है. यहाँ पे बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दिस. इट्स एन ऑर्गेनिक मतलब कि एसिड से रिलेटेड है. सो यहाँ पे आप देखोगे विनेगर इज बेसिकली, आपने एसिटिक एसिड सुना होगा ना. विनेगर एसिटिक एसिड किस में होता है, यू विल फाइंड मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे हो गया आर्नस्टिंग हो गया, टर्टिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, फिर सिट्रिक एसिड हो गया. इसी प्रकार होता है ना एसिटिक एसिड. सो एसिटिक एसिड बेसिकली किस में होता है, विनेगर में होता है. ये क्या होता है मतलब कि डाइल्यूशन ऑफ लाइक ना एसिटिक एसिड, दैट इज 5.5 to 8% solution of the acetic acid. तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन ए is going to be the correct option. Okay, let me just clear the slide for the better understanding. So यहाँ पे you will find that option A is going to be correct option. Okay, question number 38 says which of the following is related to global dimming. So basically global dimming से related कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखोगे global dimming option A says the fall of atmospheric pressure ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स. ओके, सो बेसिकली डिमिंग यानी डिम हो रहा है यानी कम हो रहा है, रिड्यूसिंग है ना. सो यू हैव टू फाइंड दैट वेयर इज समथिंग इज रिड्यूसिंग, है ना. ग्लोबल डिमिंग यानी कि उसका इफेक्ट ग्लोबल होना चाहिए, इट्स नॉट सम पर्टिकुलर रीजनल. ओके, सो फर्स्ट इज सेकेंड इज राइज इन ऑफ एटमोस्फियरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज पार्टी, है ना. राइज हो रहा है तो राइज इज नॉट डिमिंग, है ना. सो यू कैन लाइक है ना कट दिस. राइज ऑफ टेम्परेचर, राइज नहीं होगा. यू हैव टू फाइंड दैट फॉल वाला ऑप्शन देखना है आपको कि फॉल कहाँ हो रहा है. फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स, है ना. फॉल ऑफ एटमोस्फियरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज लाइक है ना. यू विल फाइंड दैट है ना. यहाँ पे आप मोस्ट अप्रोप्रिएट देखोगे एंड व्हेन यू रीड इट क्लियरली यू विल फाइंड दैट ऑप्शन डी. वी कैन गो विद ऑप्शन डी बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे दैट इट टॉक अबाउट द फॉल ऑफ द टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट, है ना. सो यहाँ पे you will find that option D is the most appropriate option. Okay, so question number 39 says about the which of the following is known as C10. C10 क्या कौन सा है ना, तो basically C10 is C10 number used to find the delay in ignition time of the fuel, है ना. that is the C10 and octane. You have to remember the C10 or octane. Okay, please read about the C10 and octane once before going to the examination hall. You will definitely going to find one question from these two concept. Okay, so C10 is about that है ना हेक्सा डिकेन के से रिलेटेड है. हेक्सा यानी कि हेक्सा मतलब कि अबाउट द सिक्स कार्बन. ओके, so that is about the hexa. So it's question number next move toward the question number 40. That is about the which of the among the following countries is not part of Arabian Peninsula. Basically Arabian Peninsula का पार्ट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आप देखोगे अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट बेसिकली ये साउथ वेस्ट एशिया वाला पार्ट है जिसको मिडल ईस्ट बोलते हैं, है ना. प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका वाला पार्ट है उस वो भी है ना, इसमें भी है, इसमें ही आता है. ओके, ये है ना अरेबियन पेनिनसुला में. तो यहाँ पे आप देखोगे कि बेसिकली जॉर्डन वाला है, जॉर्डन वहाँ पे इजराइल वाला रेड सी के पास में आ जाता है ना गल्फ ऑफ अकाबा के पास में. तो ये वाला यहाँ पे नहीं होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द, यानी कि वो ये ना जॉर्डन है वो अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं होगा. सो लेट्स डिस्कस कि कौन कौन पार्ट होंगे. सो फर्स्ट इज कुवैत इसका पार्ट है, ओमान इसका पार्ट है, यमन इसका पार्ट है, देन सऊदी अरेबिया इसका पार्ट है ना. देन बहरीन इसका पार्ट है, देन कतर एंड यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट, है ना. सो लेट मी जस्ट ना सोल्व वन ऑफ द पजल एंड वन ऑफ द कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूएई एंड दुबई, है ना. सो बेसिकली यूएई इज ए कंट्री एंड दुबई इज ए सिटी. जैसे कि इंडिया और मुंबई है ना, इंडिया एंड मुंबई, है ना. सो यहाँ दिल्ली ले लो,
है ना, दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। सो इंडिया एंड मुंबई। सो इट्स नॉट कैपिटल ऑफ, है ना, बेसिकली यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी, है ना। एंड दुबई इज ए सिटी, यानी कि जैसे हमारे मुंबई है वैसे यहाँ पे दुबई है, ओके। सो यू कैन रिमेंबर दिस, ओके। Sometime it will be asked in your examination. And what let me tell you that what I am writing here in the screen, please write it in your notebook or in your paper, because you will definitely going to find direct question from this. If you miss this, I will suggest you that you should prepare for the next attempt, because this attempt is going not going to be work for you, okay. Next is question number 41, that is which of the following statement regarding continent of Antarctica is correct. So basically Antarctica के continent से related कौन सा सही है? So यहाँ पे आप देखोगे it is the highest average elevation as compared to the other continent. Basically ये इसका highest average elevation है compared to the other continent. So first is going to be correct, है ना. Second is about the Mount Vinson. Mount Vinson is the highest peak of this continent. Definitely correct है. Mount Vinson इसकी highest peak है. इसका मतलब कि ये highest elevation वाला continent है all 7 continents में, है ना. So यहाँ पे आप देखोगे option C is going to be the correct option. Okay. Question number 42nd says which of the following biosphere reserve is spread over 3 states in India. So basically 3 states में देखोगे तो यू कैन रिमेंबर दिस बिकॉज इट इज आस्क्ड इन मल्टीपल टाइम्स, दैट इज नीलगिरी, जो कि आप देखोगे कर्नाटका, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया एंड केरला हो गया, है ना. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये 3 में फैला हुआ है ना. एंड नाउ इट्स योर होमवर्क टू टेल मी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द चांद कुमार मरकंटक की, है ना, लोकेशन, अबाउट द शेषाचलम हो गया, फिर अगस्त्य मलाई, इनकी लोकेशन यू हैव टू comment me down, okay. Comment down, okay. So that is your homework, please do your homework, okay. Question number 43rd says which of the following pairs are not correctly matched. So basically यहाँ पे क्या ना pairs दे रखे हैं, कौन सा correctly match नहीं है वो वाला देखना है आपने. So first is let's move toward the Ramnagar Wildlife Sanctuary. It says about it is in Uttarakhand, but लेट्स इट्स इन आई थिंक JNK, है ना. सो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन ए ही है ना, इनकरेक्ट हो गया. सो यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट इज द ऑप्शन बी, दैट इज चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आसाम में है, फिर नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हरियाणा में है, फिर काने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अरुणाचल प्रदेश में है. सो नाउ इट्स योर ड्यूटी टू रिमेंबर अबाउट द all the 4 options, because you will find these questions repeated multiple times in the PYQs. If you have read the PYQs and solve the papers clearly, then you will definitely going to find these type of questions repeated multiple times, okay. And if you are not solving the previous year papers, I will suggest you that you should start immediately, because now it's, I think you have 1.5 months left, so it's right time for you to start the previous year papers. You have to do at least uh, 10 years papers. 10 years paper यानी 20 papers आपको करने हैं. If you have done the 20, if you can do the 20 papers clearly, then there is no one who can stop you from getting selected, okay. Next is question number 44, that is which of the following statement regarding coconut production in Lakshadweep is correct. लक्षद्वीप में कोकोनट प्रोडक्शन से कौन सा करेक्ट है ना. सो बेसिकली प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज हाईएस्ट इन इंडिया. सो बेसिकली द टोपोग्राफी एंड द soil system that is provided in the Lakshadweep is basically best for the coconut, so it increase the productivity per hectare, that is the highest in the Lakshadweep in India, okay. So that is option A is correct. Second is about the oil content. Oil का ना content in nuts is highest in the world. So basically हाँ ये वाला correct है ना. ऑयल कंटेंट हाईएस्ट होता है. सो यहाँ पे आप देखोगे सो बोथ आर करेक्ट. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन, ओके. क्वेश्चन नंबर 45 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैरियर आइलैंड्स इज और आर करेक्ट. सो बेसिकली बैरियर आइलैंड्स के बारे में कौन सा करेक्ट है. सो यहाँ पे आप देखोगे दीज आर द स्मॉल चेन ऑफ सैंड आइलैंड्स which are formed offshore far from the coast, okay. सो बेसिकली बैरियर आइलैंड्स में आप देखोगे सो ये ऑफशोर में नहीं है ना, ये जस्ट है ना ये इसमें कोस्टल एरियाज के जस्ट है ना अटैच्ड ही है ना. सो बेसिकली ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा. बेसिकली मतलब इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस माय शॉर्ट ट्रिक इज दैट यू हैव टू गो फॉर ऑल, बट हियर यू कैन ना इजीली एलिमिनेट दिस, है ना. बट इफ यू आर नॉट एबल टू एलिमिनेट दिस देन डोंट वरी,
you can like there is no need for you to score 100 out of 100. You can just make one or two questions wrong also, na? That is not big deal, but ultimately you will find positive in this method. Okay, so option A is incorrect. That is statement A is incorrect. A is incorrect, and you will directly find the option C. That is 1 and 2, sorry 2 and 3 both are correct. So यहाँ पे आप देखोगे lagoons and slow है ना shores masses separate the barrier islands from the mainlands. Okay. Next is such locations are hazardous for settlements because they are easy swept away by storms and hurricanes. So यहाँ पे ये वाला भी correct है, ये वाला भी correct है. So यहाँ पे आप देखोगे option C is correct. Okay. Next is 46th question. Which of the following type of clouds on the basis of the identify करना है of the given characteristics. So यहाँ पे आप देखोगे and the high thin puffy white clouds of icy crystals that look like ripples है ना. So next is they appears between 20 feet 20,000 feet to 40,000 feet of the earth's surface. Okay, one of its types is called as mackerel sky because the clouds resembles large fish scales, especially when they are colored pink at the sunset. So यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि आप दे रखी है हाइट दे रखी है, तो हाइट के हिसाब से यू विल फाइंड दैट कि ये है ना ऊपर वाले क्लाउड है ना. सो बेसिकली साइरो से है ना रिलेटेड क्लाउड्स है ना. तो साइरो से देखो एक तो स्टेटस हो गया, क्यूमुलस हो गया. नाउ व्हाट इज द ऑप्शन फर्स्ट इज अबाउट द है ना हाई होता है, थिन होता है, फिर पफी वाइट क्लाउड्स होते हैं और है ना आइस क्रिस्टल्स विद दैट लुक लाइक रिपन्स हो ना. नेक्स्ट अगर आप ऑप्शन 3 पढ़ोगे, ऑप्शन सी पढ़ोगे, that is statement C पढ़ोगे, then is one of its type is called as mackerel sky because the clouds resembles large fish scales especially when they are colored pink है ना. तो बेसिकली ये वाले आप देखोगे, इन दोनों को मिला के देखोगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज रिलेटेड टू द साइरोक्यूमुलस है ना. सो नाउ what we have solved the question. Now it's your duty to read the whole cloud है ना. क्लाउड वाला चैप्टर पढ़ो. यू विल hardly take 20 minutes if you read it thoroughly है ना. and what you can do is do write all about the clouds है ना. यहीं पे जो स्पेस है ना इसमें लिख लो है ना. क्लाउड्स को डिवाइड कर लिख लो. साइरस हो गया, फिर हो गया क्यूमुलस हो गया, देन है ना मतलब कि फिर हो गया स्टेटस हो गया, देन आफ्टर निम्बस हो गया. देन आफ्टर यू कैन डिवाइड देम इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एल्टीट्यूड, then which cloud is like you know goes for the rain है ना. So you can directly write these things in your papers. So when you are going to revise, you don't need to open all the book and don't need to read 2000 books 2000 pages. You can just read 200 pages of the previous year papers and you are okay to go for your examination. Okay, next is 47th question, which says about the identify the type of drainage pattern on the basis of given characteristics. So basically drainage pattern से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस एंड रीड अबाउट देम ना. ओके, सो नाउ फर्स्ट इज द इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑन द ऑफ द स्ट्रीम्स एंड द ट्रिब्यूटरीज. सो बेसिकली ट्रिब्यूटरीज का दे रहा है यानी कि है ना कुछ है ना यही होगा रेडियल डेंड्रियाटिक है ना. एंड सेंट्रीपिटल इज बेसिकली जहाँ पे ये वाला है, इसमें सारी की सारी रिवर्स एक जगह आके जैसे कि लेक्स में होती है ना रिवर्स आके चारों तरफ से रिवर्स आके मिलती है. ओके, दैट इज सेंट्रीपिटल. ओके, सो इट्स रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ द स्ट्रीम्स एंड द ट्रिब्यूटरीज. ओके, it occurs in the area of uniform rock types and regular slopes. The map or aerial photography shows a pattern like a vein on leaf. A smaller stream join the main stream at the acute angle. So यहाँ पे आप देखोगे, so these are characteristics of ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया, ट्रेल्स भी नहीं होगा. रेडियल में होता है ना कि एक है ना पैटर्न नहीं होता, वो कहीं से भी जैसे इच्छा होगी वैसे ही मिल जाते हैं. यहाँ पे एक्यूट एंगल बोला है, तो यहाँ पे देखोगे ऑप्शन ए दैट इज डेंड्रियाटिक. दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट इज 48 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द गेटवे सिटी इज करेक्ट. ओके, गेटवे सिटी के बारे में कौन सा करेक्ट है. सो फर्स्ट इज like you know in this type of questions go for the D. Now read the question. Okay, the city whose physical location make it a link between one country and the other or between one region or the another. Okay, so basically gateway city क्या होती है. gateway city whose physical location है ना
link between the one country and another, or between one region or the another, है ना. So that is about the gateway city जो कि correct है. Next is the gateway city exercise control over the large area because it commands the entry and exit rights and power of the पर्टिकुलर कंट्री एंड रीजन. सो बेसिकली करेक्ट है, क्योंकि वो गेटवे एंट्री एंड एग्जिट है, तो यहाँ पे इनके पास पावर ज़्यादा होगी. सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑब्जर्व है ना. नेक्स्ट इज मोस्ट गेटवे सिटीज़ आर पोर्ट, many of which were formerly administered administrative centers for the colonial government. Definitely administrative centers क्यों थे, क्योंकि वहाँ पे इनके लिए this make them for easy to administer or the trade and commerce because it is on the like a very important location. So यहाँ पे आप देखोगे तो option D, that is all three of the above are correct. Okay. Next is 49th question. Which of the following has been an important early Chola painting discovered at the Brihadeswara temple, तंजावुर इन 1931. सो यहाँ पे आप देखोगे तंजावुर के टेम्पल जो है ना, बृहदेश्वर का टेम्पल है तंजावुर में, उसके बारे में कौन सा करेक्ट है. सो यहाँ पे आप देखोगे यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फाइंड इट करेक्ट. ओके. सो यहाँ पे आप देखोगे now 49th question, that is option A says the Buddha with the chori bearers on the either side, Shiva is योग दक्षिण मुद्रा. देन हो गया यक्षी काली हो गया, फिर पार्श्वनाथ विथ स्नेक हुड ऑन द लॉइन थ्रोन. सो यहाँ पे आप देखोगे तो इट इज मोर ऑफ द फैक्चुअल आर्ट एंड कल्चर टाइप क्वेश्चन. सो यू विल फाइंड दैट शिवा एज एन योगिक दक्षिण मूर्ति, दक्षिणा मूर्ति में कि मतलब कि कंडीशंस में बैठे हैं. सो दैट इज अबाउट ऑप्शन बी. ओके. Question number 50 says which of the following statement about the initial development of railway in the India by the Britishers. So यहाँ पे initial development के बारे में बात की गई है. So you may find that private financial investors for railway would get free land from the British government. Definitely correct है, उनको free land मिलेगी, incentive मिलेगा, so तभी वो काम करेंगे ना. So that is why it's correct. Second is the investor would get a return of 5% on their capital from the government if they run at the loss or secured inadequate profit. डेफिनेटली ये वाला भी करेक्ट है. यहाँ पे आप देखोगे द रेलवे वुड बी जॉइंटली मैनेज बाय द विद द गवर्नमेंट. नहीं, ये प्राइवेटली है थी, गवर्नमेंट का इसका मतलब कोई भी बात नहीं था. सो यू विल फाइंड दैट ऑप्शन बी, दैट इज ओल्ड बनाएगा ना. टू ऑप्शंस आर करेक्ट, दैट इज 1 and 2 आर करेक्ट. ओके. Next is question number 51, that is which of the following industries was most affected by the deindustrialization of India in the 19th century. So basically most affected कौन सी थी. So यहाँ पे आप देखोगे 19th century में जब वहाँ पे है ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन्स वगैरह स्टार्ट हो गई. देन आफ्टर एंड न्यू टाइप ऑफ फाइबर्स आर जनरेटेड विद द मशीन, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. सो देन इंडिया, that is a good exporter of the cotton textile, will definitely going to face the issues because now people will buy the cheaper manufactured with the machines instead of paying higher amount by for the handmade cotton textiles. Okay. So option B, that is cotton textile is most affected in the 19th century by the deindustrialization in India. So that is option B, that is cotton. Okay. Next is question number 52, that is which consider the following statement about the early phase of the national movement in India. So basically है ना early phase of national movement के बारे में कौन सा करेक्ट है ना. So यहाँ पे आप देखोगे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड अदर फॉर्म द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. सो ये वाला डेफिनेटली है ना करेक्ट है. सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड हिज ग्रुप प्लान्ड ए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एट द कलकत्ता. लेट मी just check one question. Okay. Okay, so Surendranath Banerjee and his group planned an Indian National Conference at the Calcutta. Okay. Ellen decided to create an all India body as a rival above organization to vent the grievance of the poor. नहीं ये वाला तो नहीं था, इसका तो ये वाला नहीं था. So यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन बी, that is 2 are correct है ना. So next is the question number 53, that is the giant microwave radio telescope consists of. So giant microwave telescope, it was in the current है ना. So that is why it was asked
if you have good command over the science and technology portion, then you can do this. But if you don't have, then you can simply put some knowledge ना. सो यहाँ पे आप देखोगे जाइंट मेट्रावेव रेडियो टेलीस्कोप. सो मेट्रावेव रेडियो टेलीस्कोप में बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो पैराबोलिक एंटीनाज, यू कैन से है ना, सर्कुलर एंटीनाज आर वेरी वेरी लाइक ना आउटडेटेड वाला कॉन्सेप्ट था. सो नाउ द पैराबोलिक एंटीनाज आर इन न्यूज. यू मे फाइंड दैट कि मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आप देखोगे तो पैराबोलिक वाला एंटीना यूज होता है ना. सो दैट इज वाई इट इज लाइक ना, यू कैन जस्ट एलिमिनेट द सर्कुलर वाला, है ना. यहाँ पे आप देखोगे तो है ना कंसेप्ट होता है, तो बेसिकली इसमें पैराबोलिक है और इसमें एक सिंगल से काम नहीं चलेगा, ये मल्टीपल है ना, मल्टीपल पैराबोलिक एंटीनाज यूज होते हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन. सो बेसिकली फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन कौन सा है, कॉमर्शियल है ना, स्पेस स्टेशन पूछा है, कॉमर्शियल है ना. दिस कैन बी आस्क है ना इन योर एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ द ओक्जिम मिशन, जिसपे हमारे सुधांशु शुक्ला जी अभी है ना जो स्पेस में जाके आए हैं. सो फॉर दैट परस्पेक्टिव दिस कैन बी आस्क, जो कि है ना ओक्जिम स्टेशन, जो कि कॉमर्शियल है ना, फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन है. सो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट. ओके, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये सब है ना, मतलब कि एक है ना सभी कंट्रीज का ना, मतलब कि मल्टीपल कंट्रीज का एक इनिशिएटिव है ना. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. बेसिकली ये वाला है ना एलिमिनेट कर दिया था है ना उन्होंने यूपीएससी ने. बट यहाँ पे आप देखोगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज बेसिकली दोज मटेरियल्स दैट व्हेन these materials are in near with the magnet, they get attracted with the magnet, है ना. सो यहाँ पे आप देखोगे ये बेसिकली इन्होंने मतलब कि सारे कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे आप कोई सा भी हटा नहीं सकते. सो दैट इज वाई यू विल फाइंड दैट कि ये वाला हटा दिया गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 56, दैट इज ऑन द डे when I am in the hurry to go to the office, I have a fixed quantity of rice which was just cooked and kept in a bowl, है ना. In order to cool it quickly, which one of the following is the best option. So यहाँ पे if you have the basic knowledge, if you have the practical mind, so you will है ना eliminate the options, है ना. Let it be kept in on the table of the room where there is no fan and no air, so no air conditioner. So यहाँ पे होगा ना, इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना. So ये वाला तो नहीं होगा. Second is the let it keep at the room with the AC set at the temperature of 23 at and the ceiling fan operating at the slow speed. So slow speed पे होगा, AC भी 23 पे होगी, तो it will be not going to be easily going to be like ना cool. Okay, next is the let it keep at the bowl of the water, है ना, so that the है ना ये है ना water has good absorption power, so they can it can like ना absorb the heat extra heat and operating a ceiling fan at the full speed. सीलिंग फैन होगा तो वो है ना जो भी है ना भाप बनेगी, जो है ना वाष्प बनेगी, वेपर बनेगा, इट कैन लाइक है ना वो ऊपर की तरफ है ना अट्रैक्ट खींच लेगा. देन आफ्टर इट विल बी इजी. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट. ऑप्शन डी बोल रहा है लेट इट केप्ट इन द बाउल ऑफ वाटर एट द टेम्परेचर रूम टेम्परेचर. नहीं, इसमें अगर यहाँ पे डबल मिल रहा है ना, फैन से भी हो रहा है ठंडा, देन आफ्टर वाटर से भी हो रहा है. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट, है ना. Next is question number 57. That is which of the following statement about the Mercake partnership is correct. So basically इससे partnership से क्वेश्चन है. So it is an intergovernmental partnership for global climate, है ना, एक्शन. सो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट. डेफिनेटली ये ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन है, इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप से है. इट इज़ not only an intergovernmental partnership for the global climate action but also a collaboration between governments and other stakeholders like cities, business and investors. Definitely ये वाला भी correct है ना. See it the partnership is guided by the 2030 agenda for sustainable development. ये वाला भी correct है. So यहाँ पे आप देखोगे all three are correct. So यहाँ पे अगर आप है ना उसमें ट्रिक से भी जाते तो ये वाला करेक्ट हो जाता. एंड ओवरऑल यू विल फाइंड दैट आउट ऑफ ना 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस आर with this method is going to be correct. So you will have a positive score. Okay, so that is what we need, that is we want just a positive score.
that can help us in clearing the examination. You have to just score 50 marks or 50. If you want to top this, then you can 55 to 60 are enough in this examination, है ना? You don't always have to score 90, 95. Okay, that is for you have to go to the SSC. Okay, 958th, that is the consider the following statement. In India, the Special Marriage Act protect an individual if one enter into an intercaste marriage, है ना? So basically मुस्लिम लॉज फॉर मुस्लिम मैरिजेस, है ना? इस्लामिक मैरिजेस एंड द इस्लामिक लॉज उससे रिलेटेड हो गया, फिर हिंदू मैरिज वाला हो गया, है ना, अबाउट द हिंदू मैरिजेस, है ना? अगर इंटर इंटर रिलीजन मैरिज है, सो यहाँ पे कौन सा होगा? तो वहाँ पे आप देखोगे तो, है ना, एक है ना हम जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो वाला काम में आएगा, है ना? देन राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ वंस fundamental right under article 21 of the constitution. Definitely article 20 right to life है, तो उसी में ही इसमें राइट टू मेरी वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें राइट टू स्लीप भी है, राइट टू इंटरनेट भी है, एक्सेस टू इंटरनेट भी है ना? सो ये वाला याद रखना आप, आर्टिकल 21 पढ़ लेना इसको, प्लीज़ रीड इट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज द ना ह्यूमन डिक्लेरेशन, द सॉरी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल्सो रिजोनेंट मैरिटल राइट्स ऑफ एवरी एडल्ट कॉन्सेंटिंग इंडिविजुअल. सो ये वाला भी करेक्ट है. यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन सी, दैट इज ऑल थ्री आर करेक्ट, यानी कि 6 में हमें 4+ करेक्ट मिल रहे हैं ना. सो यहाँ पे ओवरऑल वी आर इन द पॉजिटिव साइड. सो यू कैन यूज दिस ट्रिक इन योर एग्जामिनेशन इफ यू स्टक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना? And if you are not able to decipher anything and you wanted to attempt the paper, then you can just go with the trick. Okay, which of the following statement about the International Court of Justice, International Court of Justice से related कौन सा है? The court consists of members which wherein two members can't be nations of the same state. Okay, सो बेसिकली 2 मेंबर्स, हाँ ये वाला करेक्ट है, यानी कि 2 मेंबर्स एक ही नेशन से नहीं होने चाहिए इसमें. नेक्स्ट इज द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड इंडिपेंडेंटली ऑन वन अनदर एंड इलेक्टेड द मेंबर ऑफ द कोर्ट. डेफिनेटली ये वाला भी करेक्ट है. सो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट, क्योंकि बिकॉज बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 60, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भूनिधि विस्टा. भूनिधि विस्टा से रिलेटेड कौन सा सही है? सो यहाँ पे आप देखोगे, इट इज़ ए डाटा विजुअलाइजेशन सर्विस ऑफ भूनिधि प्रोवाइडिंग फुल रिजोल्यूशन मोसेक डाटा विजुअलाइजेशन कैपेसिटी थ्रू वेब मैप सर्विस. ओके, इट इज़ इनेबल्ड बाय फॉर रिसोर्सेज 2 और /2A सेंटिनल 1 and 2 सैटेलाइट. सो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन सी, दैट इज बोथ आर करेक्ट, है ना? So we are already done with the 30 questions in this session. So let's not extend it furthermore and end the session here. So for today, that is it. And I hope you learned something from this video. And first and foremost thing is that for if you wanted to clear this examination, you need a mentor. Also, you need to prepare thoroughly and for prepare according to need of the examination. For that, you have to see the and look see and solve the papers of previous years. I suggest you that solve this previous year papers as we are doing in the our series, as we are just picking the paper, not just the questions on the basis of the themes. We are picking all the paper, so that it will help you in like maintaining the pressure in the examination hall, because you will be used to with the physical paper. So that will help you in the examination hall to tackle the pressure. Okay, so that is for today. We will meet tomorrow with the next set of questions. So for today, Jai Hind and Jai Bharat.